Question 46. Meckel's diverticulum is suspected, which may give a false negative result. Recent barium investigation. ठीक है, ठीक है, barium looks like Meckel on pertechnetate. ठीक है, plus Meckel's diverticulum false negative result. Recent barium investigation. Meckel's diverticulum false negative result. Recent barium investigation. इसे एक false positive भी हम छुआ पीछे है, मुझे याद नहीं अभी. ये false negative result. Recent barium investigation. फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मेरे को पता malrotation था, malrotation पीछे हमने पढ़ा था मास्टर पास में. ठीक है, वो अगर देख लें. क्वेश्चन 47. Polyhydramnios with multiple foci of calcification throughout the field abdomen and between bowel loops diagnosed meconium peritonitis. आसान है. ठीक है, meconium peritonitis में जो होता है कि multiple foci of scattered calcification throughout the field abdomen, तो between bowel loops meconium peritonitis. ठीक है. क्वेश्चन 48. Contrast anemia shows, ये वही Hirschsprung disease की diagnosis. Contrast image shows narrow rectum with a cone-shaped transition between into a dilated more proximal bowel. Diagnosis Hirschsprung disease. Proximal bowel is dilated and there is narrow rectum and the cone-shaped transition zone between the dilated proximal colon bowel and narrow rectum. Diagnosis Hirschsprung disease. Question 49. अच्छा, ये फिर क्लीडोक्रैनियल dysplasia के बारे में है. Absent radius and ulna, vermin bones within the skull, vermin bones in the skull, or hypoplasia of distal third of clavicle, hypoplasia of distal third of clavicle, absent clavicles, and aceriophytes of distal phalanges, aceriophytes of the distal phalanges, और aceriophytes of distal phalanges. diagnosis क्या है? क्लीडोक्रैनियल dystocia. ठीक है, इसमें बस vermin bones डालो और hypoplasia of distal third of clavicle, बस ये भी काफी है कि बंदा क्या है कि क्लीडोक्रैनियल dystocia है. 50 rotator accident, neck pain. Radiograph including a swimmer view failed to demonstrate the entire cervical spine. Next step is which? MRI ski spine to see it in detail. ठीक है, फिर head rotator accident, neck radiograph and radiograph was failed to demonstrate entire cervical spine. तो फिर उसके बाद MRI ski spine करेंगे. क्या कि हमें nerve entry suspect कर रही है और डिटेल देखने के लिए कि कोई brachial plexus entry नहीं हुआ, मतलब बेसिक सी स्पाइन के nerves देखने के लिए तो MRI करते हैं. सर 1 मिनट वेट करेंगे? जी ठीक है. अच्छा ठीक है, फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर. ठीक है, या ऑन रहेगा? ठीक है, आप जाएं फिर आ जाए. बस सर फिर कंटिन्यू कर लें, छोड़ दें सर, ऑन है? कंटिन्यू कर लें सर. अच्छा, जी 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 51 बस पढ़ाएं. तकरीबन खत्म है ना? 51. अच्छा हाँ. जी जी 51. 18-month-old boy, images of his wrist shows marked metaphyseal cupping of the distal radius and ulna and increased thickness of the radial growth plate. Diagnosis Rickets. ठीक है, metaphyseal cupping है, marked metaphyseal cupping of the distal radius and ulna and increased thickness of the radial growth plate. Diagnosis क्या है? Rickets है. ये मैं कहाँ से सारे पैटर्न रिकॉर्ड्स के मेटाफाइजल फ्लेयरिंग है, बेल शेप थोरैक्स है, ये जो है बायलैटरल जनवाड़ा है, और ये सारे रिकॉर्ड्स के फाइंडिंग्स है. बस ये देख लें. कभी आगे जाते हैं. क्वेश्चन 52. 4-month-old infant with cyanosis and repeated squatting episode unlikely on plain radiograph, fullness in the pulmonary artery. ठीक है, ये डायग्नोसिस है कैनोरिक हार्ट डिजीज. इसमें जो है रिपीटेड स्क्वाटिंग एपिसोड एंड रिपीटेड स्क्वाटिंग एपिसोड तो डायग्नोज हो गया टेट्राजिया फैलट. इसमें हम स्क्वाटिंग करते हैं, बेबी स्क्वाटिंग करते हैं ताकि रिलीव हो जाए. तो इसमें पल्मोनरी अलिगीमिया हो गया है. पल्मोनरी अलिगीमिया है ना, तो इसमें फुलनेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी नहीं है. तो वो अनलाइक पेनरिका फुलनेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. वो ये भी है कि कैनोरिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, चेस्ट एक्टिव पर क्या होता है, वेस्कुलरिटी कम होती है, डिक्रीज होती है. एक कैनोरिक पर वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है. तो जब देख लिया कि कैनोरिक बेबी है तो वेस्कुलरिटी डिक्रीज होगी, तो फुलनेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी नहीं हो सकती. वेस्कुलरिटी डिक्रीज है. क्वेश्चन 53. True recurrent diagnosis of axial testicular torsion. Testicular hyperemia does not exclude torsion. ठीक है, normal gray in early stages all can be with testicular hyperemia. बस ठीक कह रहा है कि जब testicular hyperemia does not exclude, जब testicular well vascularized, जब आप टेस्टिस को अल्ट्रासाउंड करते हो और देखते हो कि वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्शन बिल्कुल नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि शायद एपिजोडिक टॉर्शन हो सकती है. ये कि जो अभी वेस्कुलरिटी ठीक है और कुछ 5-10 मिनट बाद दोबारा टॉर्शन शुरू हो जाए, इतना कुछ है इसमें. क्वेश्चन 54. 10-year-old boy, short of his age, complex partial cystic, strongly calcified homogeneous supracellular mass. ये क्रेनियोफैरिंगियोमा. ठीक है, दोनों ये कोलॉइड सिस्ट है, क्रेनियोफैरिंगियोमा, पिट्यूटरी एडेनोमा. ठीक है जी
पिट्यूटरी एडनोमा ये देखो सुपरसेलर है, ये भी पिट्यूटरी एडनोमा। फिलहाल क्रेनियल पेरेन्किमा देखते हैं। जी देखो टेन्यूरल बॉय, ठीक है, अमाइड मास to fill supracellular mass, ठीक है, strongly calcified supracellular inhomogeneous या heterogeneous लिख सकते हो, strongly calcified heterogeneous supracellular mass, ठीक है, it fills the third ventricle and causes cranial lamination of the fornix, ठीक है, hypertension on T1 and hypertension on T2 and marked hypertension on T2, hypertension on T1 and T2 both पर है। ये सीटी स्कैन है, ये MRI, तो ये है T1 पर hypertension, T2 पर भी hypertension, ठीक है। ये भी क्रेनियल पेरेन्किमा है, इसमें कौन से, ये क्रेनियल पेरेन्किमा, ठीक है। अभी कौन से, ये पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा, क्रेनियल पेरेन्किमा, ICA इंटरनल cerebral artery aneurysm, ठीक है। दिस इज डिस्क्राइब क्रेनियल पेरेन्किमा जो है hypertension on T1 and T2 shows internal calcification and fills the third ventricle, diagnosed cranial parenchyma, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, मेडुलब्लास्टोमा, ये दोनों मेडुलब्लास्टोमा है, ये दोनों एपेंडाइमोमा, ठीक है, मेडुलब्लास्टोमा एपेंडाइमोमा। अच्छा, ये ऊपर आप देख सकते हैं, देखो ये ऊपर लिखा है मेडुलब्लास्टोमा वर्सेस एपेंडाइमोमा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4-year-old girl, she hypertense mass in the region of fourth ventricle, hypertense mass in the region of fourth ventricle, ठीक है, T2 hypointense and contains areas of both low and high signal, मतलब heterogeneous है, well delineated mass, well delineated है, ठीक है, well outline है, expands the fourth ventricle and causes elevation of superior medullary velium surrounding edema, diagnosed किया medulloblastomma। क्वेश्चन 56, ये है Langerhans cell history, ये मेडुलब्लास्टोमा, ये है मेडुलब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा, लिम्फोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ठीक है। अच्छा, देखो क्वेश्चन 56, पेनफुल subgleal mass and painful right arm, radiographs with well-defined ovoid lytic lesion in the right parietal bone, well-defined lytic lesion in the right parietal bone, ठीक है, right bone, and well-defined defect in the left temporal bone, well-defined defect in the temporal bone, ill-defined expansile lytic lesion in the shaft of right humerus, ठीक है, इसमें humeral lesion shows cortical erosion, MRI with parietal lesion is associated with intensely enhancing soft tissue mass, diagnosis, Langerhans cell histiocytosis, ठीक है। इसमें यह कि Langerhans cell histiocytosis में ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है। जब आपको इसके बारे में ये कहेंगे तो कहेंगे सिस्ट इन द लंग और जो बोन इन्वॉल्वमेंट कहेंगे कि बोन में ये लाइटिक लेजेंड्स या पैरेटल बोन में, तो फिर आप सोचो कि यार ये तो लिम्फेंजियोलियोमाइमेटोसिस तो नहीं हो सकता, ये जो है लिम्फेडाइटिस कार्डियोमाइटोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो ये डायग्नोसिस Langerhans cell histiocytosis है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ये वही हेड स्कैन फॉर biliary atresia, 57 neuritis with jaundice, pale stools and hematomegaly. Head scan shows good hepatic uptake at 15 minutes, but on delayed imaging at 6 to 24 hours, no activity within the bowel, cause क्या है congenital biliary atresia, ठीक है, पहले बार आता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 58, which support a diagnosis of gastroparesis rather than exomphalus, defects rated right of the midline, gastroparesis, defects rated right of the midline, ठीक है। Question number 59, 3-year-old boy with recurrent urinary tract infections, imaging modality is appropriate to detect the extent of renal scarring, T9M DMSA scintigraphy, ठीक है, DMSA for renal scarring and also DMSA for renal differential function, दोनों में DMSA इस्तेमाल करते हैं, DMSA used for renal scarring and also for differential renal function, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, 18-month-old child with anemia, E. coli, gastroenteritis, heart failure, and acute renal failure, necessitating dialysis. First screen shows thrombocytopenia, diagnosis hemolytic uremic syndrome. भी ऐसा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है, और फिर ये सारे जो है हार्ट फेल, acute renal failure है, और ब्लड की जो thrombocytopenia है, तो diagnosis hemolytic uremic syndrome, ठीक है, gastroenteritis भी है। बाकी कोई ऑप्शन सेंस नहीं बना, ठीक है, बस जी सर। बस ठीक है, थैंक यू, जी सर। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।